This is Bhaushan Mukherjee and welcome to my YouTube channel I Love Electrical Engineering. Today I will discuss some interview question and answer on substation project. Substation project के ऊपर में क्या interview का question आ सकता है? Today I will discuss on this and this is my part 2. I have already discussed in part 1. This is my part 2 on substation project interview question and answer. So the first question will be, what is the first equipment in a substation? हम लोग जानता हूं सबस्टेशन का जितना भी इक्विपमेंट रहता है उसका हार्ट होता है ट्रांसफार्मर। सबस्टेशन में जितना भी इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है देयर हार्ट इज ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इज द मेन इक्विपमेंट ऑफ एनी सबस्टेशन। बट माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट इक्विपमेंट इन ए सबस्टेशन? टू सी जहां से पावर लाइन इन हो रहा है, जहां कोई भी सबस्टेशन है जहां से पावर इन हो रहा है थ्रू एनी ट्रांसमिशन लाइन, द फर्स्ट इक्विपमेंट ऑन दैट लाइन इज लाइटनिंग अरेस्टर. So lightning arrestor is the first equipment of any substation before entering power into the substation. Next पूछा जाता है, what is the sequence of the other equipment in a substation? What is the other equipment sequence in a substation? So you have to answer in this way. For line feeder, first there is LA, then CVT, capacity voltage transformer, then wave trap. Fourth is current transformer by CT, then isolator, then circuit breaker, then again isolator, then power enter in the bus bar. And similarly for transformer feeder, first there is isolator, then there is circuit breaker, then again isolator, then current transformer, then lightning arrestor, then power enter into transformer. This is the sequence of equipment in any substation. Next जो पूछ सकता है, what is the difference between PT and CVT? What are the difference between potential transformer in PT and CVT, capacity voltage transformer? So both are used for voltage measurement. Voltage high voltage को step down करके lower voltage में voltage को measurement करने के लिए and for some protection के लिए we have used PT or CVT. But what are the difference between them? Basically पीटी का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है दैट इज स्टेप डाउन द वोल्टेज एज ए स्टेप डाउन वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये हाई वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में स्टेप डाउन करता है बाय टू एंडिंग ट्रांसफार्मर। बट इन केस ऑफ सीवीटी ये पहले हाई वोल्टेज को थ्रू कैपेसिटर डिवाइडर वोल्टेज को डिवाइड करता है बाय कैपेसिटर ग्रेडियंट बाय कैपेसिटर डिवाइडर व्हाट एवर यू कैन से। कैपेसिटर डिवाइडर वोल्टेज को एक लिमिट तक उसको नीचे लेके आता है। सपोज द सिस्टम वोल्टेज इज 220 kV, तो कैपेसिटर ग्रेडियंट लगा के उसको पहले एक लिमिटेड वोल्टेज तक मतलब 11 kV या 3.3 kV तक लेके आता है। फिर उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करके हमारा जो डिजायर वोल्टेज लेवल चाहिए लाइक 110 वोल्ट वो हम लोग उससे कलेक्ट करता हूँ। तो फॉर पीटी डायरेक्टली वी हैव रिड्यूस द वोल्टेज फ्रॉम द सिस्टम लेवल टू 110 वोल्ट फॉर प्रोटेक्शन और मेजरमेंट। बट इन केस ऑफ सीवीटी यूज कैपेसिटर ग्रेडियंट यूज करके वोल्टेज को पहले हाई वोल्टेज को लो में लेकर आता हूं, फिर एक छोटा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करके उसमें हमारा डिजायर सेकेंडरी जो वोल्टेज चाहिए कंट्रोल वोल्टेज लाइक 110 वोल्ट वो हम लोग कलेक्ट करता हूं। सेकेंडली कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर में कैपेसिटर को यूज करके हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी को फॉर पीएलसीसी और कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोग जो एक ही कंडक्टर का थ्रू पावर और कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी सेंड करता हूं, तो कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को हम लोग कलेक्ट करता हूं थ्रू सीवीटी कैपेसिटर। बट इन केस ऑफ पीटी देयर इज नो प्रोविजन ऑफ दिस। एंड इफ यू सी द यूज ऑफ पीटी एंड सीवीटी, पीटी's use is limited up to 33 kV. 33 kV of system तक PT is used. But for high voltage and extra high voltage above 33 kV, we are mainly use CVT. As it has more function like high frequency collection, high frequency communication data collection through CVT, and as we have used capacitor gradient first, then use step down transformer, then it is also economically for higher voltage. So mainly there is difference two. One is in operating principle and second there is extra feature. Similarly, it is in case of high voltage system, it is more economical compared to PT. It is more lightweight compared to PT. All these things. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कर रहा हूं, व्हाट इज द यूज ऑफ ए वेव ट्रैप इन ए सबस्टेशन। सबस्टेशन में जो वेव ट्रैप यूज होता है उसका फंक्शन क्या है? तो हम लोग जानता हूं
ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर होता है, सेम कंडक्टर में हम लोग पावर भी ट्रांसपोर्ट करता हूं, पावर के साथ साथ एक हाई फ्रीक्वेंसी इंजेक्ट करके हम लोग कम्युनिकेशन व डाटा भी ट्रांसफर करता हूं, टेलीकम्युनिकेशन भी करता हूं इंटर सबस्टेशन के अंदर। हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डिजाइन होता है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी चला जाएगा तो सिस्टम को डैमेज कर सकता है, वो सिस्टम को डैमेज करेगा, हार्मोनिक प्रोड्यूस करेगा। टू अवॉइड दिस वी हैव यूज्ड वेव ट्रैप एज ए हाई फ्रीक्वेंसी बैरियर। हाई फ्रीक्वेंसी को वेव ट्रैप रोक देता है, उसका आगे जाने नहीं देता है, लो फ्रीक्वेंसी को पास कर देता है एंड हाई फ्रीक्वेंसी को रोक देता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वो वेव ट्रैप का थ्रू पास होकर चला जाता है, बट वेव ट्रैप जो हाई फ्रीक्वेंसी हाई कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी होता है 300 किलोहर्ट्ज 500 किलोहर्ट्ज, उसको जाने नहीं देता है, वो उधर ही रुक देता है। एज wave trap is a coil. If you see the wave trap is basically a coil, is an inductor. An inductor is directly proportional with frequency. X L is equal to 2 phi FL. हमारा जो रिएक्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा उतना ही रिएक्टेंस ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा वो बाधा देगा। तो एज ए हाई फ्रीक्वेंसी बैरियर इट इज यूज्ड एज ए हाई फ्रीक्वेंसी बैरियर। Wave trap is mainly used as a high frequency barrier. A low frequency by electrical frequency को सबस्टेशन में एंटर होने में देता है एंड हाई कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को उधर ही रुक देता है एंड थ्रू सीवीटी कैपेसिटर काबलिंग होके वो पीएलसीसी में जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में आ रहा हूं, जो व्हाट इज द डिजायर अर्थिंग वैल्यू ऑफ एनी सबस्टेशन। सबस्टेशन में जो हम लोग अर्थ मैट बनाता हूं, अर्थ ग्रिड बनाता हूं, उसका डिजायर वैल्यू क्या है। एंड सो सबस्टेशन में जो हम लोग अर्थ प्लेन बनाता हूं, द डिजायर वैल्यू ऑफ अर्थ मैट शुड बी बिलो 1 ओहम। द डिजायर वैल्यू ऑफ द अर्थ मैट ऑफ एनी सबस्टेशन शुड बी बिलो 1 ओहम। If you measure the electrical resistance of any pit connecting with grid, it should be below 1 ohm. And for electronics earthing like PLCC, like SCADA, like DCS, it should be below 0.5 ohm. So electrical earthing, the earth mat value should be below 1 ohm, and for electronics earthing like PLC, DCS, SCADA, it should be below 0.5 ohm. And if you measure the individual earthing measurement without connecting with earth mat के साथ कनेक्टिंग लिंक छोड़ के इंडिविजुअल कोई पीट का मेजर करेगा, इट विल बेटर इफ यू विल कम द वैल्यू विद इन 1 ओहम। 1 ओहम के अंदर इंडिविजुअल पीट का भी वैल्यू आएगा तो इट विल बी बेटर, बट it is acceptable up to 5 ohm. Individual pit without earth mat up to 5 ohm is acceptable. एंड इसका ज्यादा आएगा तो हम लोग को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा लाइक चारकोल, सॉल और अर्थिंगेट बेंटोनाइट पाउडर। इसको देके उसका अर्थ रेजिस्टिविटी को कम करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली अर्थ पीट वैल्यू विल आल्सो डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूँ, हम लोग जो सबस्टेशन में कोई भी जगह में जो हम लोग जो केबल लेइंग करता हूँ, केबल बहुत जगह में बेंड करना पड़ता है, तो व्हाट विल बी द सेफ बेंडिंग रेडियस ऑफ एनी केबल। हम लोग जो सबस्टेशन में केबल टेंच के अंदर भी बोलिए, बाइट केबल भी बोलिए, बहुत जगह में केबल को बेंड करना पड़ता है। तो जो बेंड करता हूं, व्हाट इज द सेफ बेंडिंग रेडियस। तो सेफ बेंडिंग रेडियस ऑफ एनी केबल इज 12D to 14D, where D is the diameter of any केबल। केबल का डायमीटर D होने में सेफ बेंडिंग रेडियस इज 12D to 14D। 12D to 14D के अंदर वो बेंड होगा तो इट विल बी सेफ। सो नेक्स्ट मेरे क्वेश्चन में आ रहा हूं, आइसोलेटर भी सर्किट को ब्रेक करता है, सर्किट ब्रेकर भी सर्किट को ब्रेक करता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर। आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर का अंदर डिफरेंस क्या है। बेसिकली आइसोलेटर जो होता है दैट इज ऑपरेटेड मैन्युअली। इन फॉल्ट कंडीशन इट विल नॉट डिस्कनेक्टेड ऑटोमेटिकली, बट इन केस ऑफ ब्रेकर वी कैन ऑपरेट इट मैन्युअली एज वेल एज इन फॉल्ट कंडीशन ऑटोमेटिकली ब्रेक द सर्किट। जब रिले से उसको इनपुट मिलता है ये फॉल्ट कंडीशन में, ये ऑटोमेटिकली ब्रेक द सर्किट एंड for testing and other purpose we can manually also switch on or switch off the circuit breaker, but in case of isolator it is operated only manually. During fault condition isolator is not operated automatically. So this is the first difference. And for operationally the second difference is isolator is mainly operating in off circuit condition. जब सर्किट लोड में नहीं रहता है, जब सर्किट लाइव नहीं रहता है, उसी टाइम में आइसोलेटर को ऑपरेट कराया जाता है। But circuit breaker is used in live circuit in all load condition.
Circuit breaker is switch on or switch off in on load condition but in live condition, but isolator is operated mainly on off circuit condition, and basically isolator is operated in the maintenance of circuit breaker. Circuit breaker को लाइन से ऑफ सर्किट करने के लिए, साइड से ब्रेक करने के लिए ड्यूरिंग मेंटेनेंस, बेसिकली वी हैव यूज्ड द आइसोलेटर. नेक्स्ट रिगार्डिंग सर्किट ब्रेकर में जो क्वेश्चन में आ रहा हूं, जो व्हाट आर द टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर यूज्ड. So if you see the industrial application for low voltage 415 volt, you have used ACB, air circuit breaker. From 1.1 kV to up to 33 kV, mainly there is a use of VCB, vacuum circuit breaker. Vacuum circuit breaker मतलब जो आर्क quenching medium है वो है vacuum. उसमें vacuum interpreter use होता है as a arc quenching medium. But in case of above 33 kV system, 132, 220, 400, 765 kV, we have used SF6 circuit breaker. Sulfur hexafluoride circuit breaker, and this SF6 gas is used as a arc quenching media of the circuit breaker. जो हाई वोल्टेज का आर्क क्वेंचिंग मीडियम ज्यादा होता है बोलकर हम लोग SF6 गैस यूज करते हैं सर्टेन प्रेशर टू डीआयोनाइज द आर्क क्वेंचिंग. तो जो आर्क क्वेंचिंग मीडियम होता है फॉर हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर दैट इज SF6. सो व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द SF6 गैस इन सर्किट ब्रेकर. तो SF6 सर्किट ब्रेकर में जो गैस रहता है दैट इज 6 to 7 kg, basically 6 kg per centimeter square by 6 bar. If you see the average in any breaker in high voltage system, it is in between 6 kg per centimeter square to 7 kg per centimeter square. And this is the very important thing that this 6 kg pressure can quenching the earth media up to 220 kV. अप टू 220 kV सिस्टम का आर्क क्वेंचिंग मीडिया को डियोनाइज करने के लिए, आर्क क्वेंचिंग मीडिया को स्टेबल करने के लिए it can do. So I am repeating again that this SF6 gas that is up to in 6 kg pressure can work as a arc quenching media up to 220 kV. 220 kV सिस्टम के बाद में 6 kg प्रेशर में आर्क क्वेंचिंग मीडिया कर नहीं पाएगा. It is used up to 220 kV system as a 6 kg pressure as a arc quenching media. So what happened for 400 kV? What happened for 765 kV? हम लोग फिक्स कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट का डिस्टेंस को सेम रख के 6 kg प्रेशर में अप टू 220 kV तक आर्क क्वेंचिंग मीडिया को हम लोग कंट्रोल कर सकते हो. बट अबव 220 kV सिस्टम मेंटेनिंग द सेम डिस्टेंस बिटवीन मूविंग कॉन्टैक्ट एंड फिक्स कॉन्टैक्ट, द 6 kg प्रेशर इज नॉट सफिशिएंट टू वर्क एज ए आर्क क्वेंचिंग मीडियम. What have we done for that 400 kV or for 760 kV system? For more than 220 kV system, we have used multi-break in circuit breaker. Multi-break means we do double breaking. Double breaking means we have used 2-number earth quenching media, 2-number breaking system for 400 kV breaker. Similarly, for 765 kV breaker, we have used 4-number SF6 interpreter or 4-number breaking system for 765 kV system. So for above 220 kV breaker, maintaining the same gas pressure that is 6 kg per centimeter square, we have used multi-breaking system. For kV breaker, we have used double breaking system. For 765 kV system, we have used 4-time breaking systems.